Hello everyone. So today we will solve the paper of PGCIL NR3 date 22 August 2021. Okay, we already solved SR2 paper. Now SR1 answer key is also released, so we will solve that paper also. The paper is so simple. So many questions are repeated, which already we did in previous years papers. So here is the first question: the resistance of a conductor of a diameter d and the length L is r ohm. If the diameter of the conductor is half and the length is also half, the resistance will be okay. So we know the formula R1 equals to rho L1 upon A. Okay, area we know that pi r square we can write, otherwise we can write pi d1 square by 4. After that we have to find the value of r2, that r2 is rho l2 upon a2. So here we can see that length is half, so l by 2, and the area is also half, so d1 square by 16. So it becomes 2 into rho l1 upon pi d1 square by 4. It means r2 is the 2 times of r1. Okay, the answer is B option, 2r ohm. For 8r ohm, the length should be 2 times. If they say the length should be 2 times, then the answer will be 8r ohm. But here they are saying the length is L by 2. Next question you can see, how is the transient current in a loss free RLC circuit? So in a loss free RLC circuit, the effect of resistance due to uh, loss free, so no effect of resistance is there if loss free circuit is there, only the transient due to L and C, the transient current is sinusoidal. So answer will be sinusoidal is there. Next is Poisson's equation. We know Poisson's equation is the del square V upon del x square equals to minus rho V upon epsilon naught. So we know that Poisson's equation is the generalized. It is a generalization of the Laplace equation, and it is a equation which is a partial differentiation equation of the electrical type of broad ability in physics. Now, in which of the following circuits the transient current may not occur? So we know we already read the question. This question, second question is similar as a second question. The transient current may not occur in the pure resistive circuits. Which of the following expression is correct for electric field strength? So we know that D equals to epsilon E. So D equals to epsilon E is the in the option number D. How much energy will be stored in a magnetic field of coil which has self-inductance of 50 millihenry and current of 40 ampere? So we know the formula of energy 1 by 2 Li square. You can put the values only. Under which condition transducer must operate? So transducer must operate in the varying electromagnetic fields. Okay, so answer is option number D, varying electromagnetic fields. Which of the following is not an integrating instrument? So why with the help of options we can neglect that voltmeter is not our integrating instrument. The example of integrating instruments are watt hour meter and the ampere hour meter. Which DC motor has the least percentage increase in input current for the same percentage increase in torque? Okay, they are asking like which कौन सी DC motor है जिसका least percentage input current में increase करेगा for same percent increase in the torque. So the answer is series motor. If they ask the highest percentage increase in input current, so the answer will be shunt. So you have to remember the both the things, that for the least percentage the answer is series motor, and for the highest percentage increase in input current with
same torque, that is shunt motor. In DC motor, the percentage of residual magnetism is, so it's very minimum. It is approximately 2 to 3%. Which of the following is the speed, power, output characteristics of the three-phase induction motor? So here I can zoom the things, so you can easily remember that the option number A is the speed, power, output of the three-phase induction motor. Next question is that for starting of an induction motor, star delta starting can be considered equivalent to an auto transformer starter with the ratio of. So we know that star delta, if we connect it into the auto transformer, it becomes the 1 by root 3 times. Okay, for starting an induction motor, star delta starting can be considered, that we know that. Okay, if it is considered equivalent to the auto transformer, then it becomes the 1 by root 3 times. Okay, in percentage, the 1 by root 3 times is the 57.73%. Transformer operating at 25 to 400 Hz supply frequency contain core made of. So we know the silicon, the high permeability should be there for the good material for the transformer core. Okay, so high permeability material should be there. So high permeability iron and steel alloy should be used for the 25 to 400 hertz frequency. You can download the paper from the telegram group SSCW junction. Okay, so telegram ग्रुप से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं. PDF will be available on the telegram group. Next question: if two winding transformer of a given volt ampere rating connected as an auto transformer, then it can held on. So we know that uh, the transformer, if a two winding transformer is there, okay, यदि किसी दिए गए वोल्ट एम्पियर रेटिंग में जो दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है और उस ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में ऐड किया जाता है, तो वी नो that high or volt ampere should be required. So it can handle for the high volt ampere. So answer will be option number A, high volt ampere. Why transformers cannot? Why transformers connected in parallel should have voltage same voltage ratio? तो होता क्या है, आप कंडीशंस अच्छे से जानते होंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर की. तो पैरेलल कनेक्शन ट्रांसफार्मर में अगर स्लाइटली डिफरेंट वोल्टेज रेशियो अगर हम ले लेते हैं, तो इनइक्वलिटी की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसकी इनइक्वलिटी की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है. ठीक है, इन द सेकेंडरी वाइंडिंग अंडर नो लोड कंडीशन. ठीक है, which may be much greater than the normal no load current. So the current will be quite high as the leakage impedance is low. When the secondary winding is loaded, the circulating current will tend to produce unequal loading on the two transformers. Okay, so that's why the answer is, to avoid the no load circulating current, we have to take the same voltage ratio. So you have to remember the thing that for to avoid the no load circulating current, because due to inequality of the induced EMF at the secondary side for the flowing of the no load circulating current. If the percentage impedance of the two transformer working in parallel are different, so the options are I am telling you the all condition of parallel ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, पैरेलल कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर तो होता क्या है, सेम वोल्टेज रेशियो, सेम टर्न रेशियो, सेम फेज एंगल शिफ्ट, सेम फ्रीक्वेंसी रेटिंग ऑफ बोथ द ट्रांसफॉर्मर्स. ओके, द सेम पोलैरिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर,
they should be connected at the same phase sequence. ये सब क्या है पॉइंट्स हैं, ठीक है, फॉर द पैरेलल कनेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. क्वेश्चन में पूछा गया कि the percentage impedance of the two parallel connected transformers, okay, are different, then also the parallel operation is possible. ठीक है, तो ऑप्शंस जो आप देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, पैरेलल ऑपरेशन विल स्टिल बी पॉसिबल बट द पावर फैक्टर्स एट विच द टू ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर, ठीक है, ऑफ द कॉमन लोड. तो ये होता क्यों है? बिकॉज अनइक्वल इम्पीडेंस रेशियो but same kVA. So due to this is commonly used when there are budget constraints. तो ये कंडीशन से आपको याद होनी चाहिए. पहली कंडीशन, in this current divides in inverse proportions to the impedance and larger current flows through the smaller impedance. That you know that the lower percent impedance transformer can be overloaded when subjected to heavy loading, while the other higher impedance transformer will be lightly loaded. So the answer is for this condition, unequal impedance ratio but the same kVA, and the answer is parallel operation will still be possible. In PMDC motors, what should be the minimum value of ratio of magnetic to electric loading? For this question, the answer is 50. So the ratio of the magnetic to electric loading, the value for that is 50. The speed torque characteristics of the BLDC motor are similar to that of. So the answer is the DC shunt motor. You can see the speed torque characteristics of the DC shunt motor. So it's similar look like as the BLDC motor. Load duration curve indicates what? So we know that in the load duration curve, the number of hours for which the particular load lasts during. Okay, so it looks at like a load duration curve. So we know that it's a peak time of the load using by the consumers. Okay, different types of loads used at the different times. So the answer is A. Critical voltage limit of the transmission line which increased by. So we know, so you actually know the formula of critical destructive voltage, that Q naught R delta ln d upon r. Okay, so it depends on the radius also. So if we increase the radius of the conductors, then the critical voltage limit also increased. So option number C is the right answer. You can read the two statements that unsymmetrical spacing configurations causes the line interference. Unsymmetrical spacing causes the voltage induction in the communication line. The above problems can be eliminated by. So we already learned that thing, read that thing in the power system, that if we do transposition of the conductors, okay, if we do transposition of the conductors, so we can eliminate the unsymmetrical spacing. Okay, we can save from the unsymmetrical spacing, like that they are saying that unsymmetrical spacing causes the voltage induction in the communication lines. We can eliminate with the help of transposition. So answer is transposition, option number A. Most industrially accepted insulators used in HVDC is. So it's a high resistance toughened glass type. They are asking about the HVDC. Okay, so high resistance toughened glass type. Grading of cables is performed in order to achieve. So if stress should be uniform, then it can achieve reduction in the quantity of insulation. Okay, reduction in the quality of insulation. So we can't reduce the quality, but we can reduce the quantity of insulation. Okay, but हम क्वालिटी तो नहीं घटा सकते. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ऑप्शन.
Current effect in non-transmission line is due to the fact of. So we know that front effect it occurs due to the line capacitance. तो हम जानते हैं करंट इफेक्ट के बारे में कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज जो होता है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस इफेक्ट का मेनली जो अकरेंस होता है लाइट लोड की कंडीशन में होता है, ठीक है, और ओपन सर्किट एट दी रिसीविंग एंड की कंडीशन में अकर होता है। करंट इफेक्ट इज ड्यू टू द चार्जिंग करंट ऑफ द लाइन, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। और चार्जिंग करंट किस वजह से होता है? आपकी कैपेसिटेंस की वजह से। सो आंसर इज लाइन कैपेसिटेंस। Which semiconductor power device out of the following is not the current triggered device? सो मॉसफेट आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, इसलिए करंट ट्रिगर डिवाइस नहीं है। बाकी सारे आपके जो हैं डिवाइसेस वो क्या है? तो करंट ट्रिगर। इसमें आपसे सिलिकॉन कंट्रोल स्विच का सिंबल पूछा है और सिलिकॉन कंट्रोल स्विच का सिंबल आप जानते हैं, ठीक है। पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, और आपको जब वेबसाइट दिखेगी तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको एक डायग्राम से दिखाई देगा जो कि डायोड रेक्टिफायर सर्किट को शो कर रहा है। और इस डायोड रेक्टिफायर सर्किट में आपको डायोड्स और क्या दिखाई दे रहे होंगे? एक तरफ फेज सीक्वेंस दिखाई दे रहा होगा आर वाई बी का, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि फेज सीक्वेंस आर वाई बी है आपका, तो डायोड D1 जो है वो कहाँ से कंडक्ट करेगा? तो हम सर्किट देख के पता लगा रहे हैं कि 90 डिग्री कंडक्ट करेगा, ठीक है। और 30 से 150 डिग्री यानी कि इतना उसकी वैल्यू क्या होगी? कंडक्शन एंगल कितना होगा अपना? 30 डिग्री से 150 डिग्री। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट it conducts from 30 to 150 and D1 starts conducting first, as it will be the most positive as it is connected to the R phase. Okay, so I am telling you the question in also in Hindi and English both. For the thyristor to remain in the on conducting state, so of course you know that रिमेनिंग ऑन स्टेट में रिमेन करने के लिए हमें कंटिन्यूस गेट सिग्नल नहीं चाहिए होता है फॉर द थायरिस्टर। ओके, वी नॉट रिक्वायर्ड द कंटिन्यूस गेट सिग्नल फॉर द टू रिमेन द इन द कंडक्शन इन ऑन स्टेट फॉर द थायरिस्टर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which of the following motor is preferred for the automatic drives? So for the automatic drives, Bart Leonard controlled DC motors are used. The H type of poles are used to transmit the voltage up to, the answer is 132 kV. Okay, so you saw already the H type of poles like this. Okay, the reactive power component kVAR. So kVAR equals to kilowatt tan phi and kVA sin phi. Electrode potential of standard hydrogen electrode at 25 degrees Celsius is zero. Which coal contains maximum percentage of carbon? The answer is anthracite. एंथ्रासाइट जो है आपका वो 90% कार्बन, 90% कार्बन होता है। बिट्यूमिनस का होता है 70% कार्बन, लिग्नाइट का होता है आपका 40% कार्बन एंड पीट का होता है आपका 28% कार्बन, ठीक है। तो एंथ्रासाइट क्या होगा आपका? 90%, ठीक है। लिग्नाइट जो आपका है 40% कार्बन, बाइटोमिनस आपका है 70% कार्बन एंड द पीट ऐसी 28% कार्बन। तो आपसे पूछ सकते हैं वैल्यूज भी और लीस्ट परसेंटेज भी आपसे पूछा जा सकता है। द सॉल्यूशन विच रजिस्टर द चेंज इन pH इज कॉल्ड द बफर सॉल्यूशन। X and Y are mutually perpendicular if the angle between them is 90 degree. एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो वेक्टर्स आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। दोनों जो आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसका मल्टीप्लाई करके अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ वाई की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 4π/9 को आपको डिग्री में बदलना है, रेडियन से, 180 डिग्री अपॉन पाई का मल्टीप्लाई आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, मैथ्स का थोड़ा क्वेश्चन है, 1/3πr²। एच बाइनरी नंबर्स आपसे पूछे गए हैं कि 10101 को आप डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे कन्वर्ट करना होगा तो जानते हैं कि 1 × 2 की पावर 4, 0 × 2 की पावर क्यूब,
वन स्क्वायर इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू टू की पावर वन, इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। कई बार मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, इसलिए मैं जो क्वेश्चन होते हैं उनको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको केवल प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, जैसे आप डेसिमल नंबर 43 इन हेक्साडेसिमल एंड बीसीडी नंबर सिस्टम रेस्पेक्टिवली, तो देख सकते हैं आप, यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस। ओके, 43 तो आपको 16 से डिवाइड करना होगा, तो 16 टू 32 होता है। ठीक है, तो 32, ठीक है, जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके आंसर बचेगा बी, क्योंकि 32 और 43 में 11 का डिफरेंस है, और 11 क्या होता है आपका पी। ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा आपका इधर, तो 2 भी ऐसे ऊपर जाना होता है, तो 2 भी इसका आंसर। और 43 यानी कि आप जब बीसीडी में लिखेंगे तो चार चार का पेयर बना लेंगे। ठीक है, चार और चार, फोर क्या होता है आपका 0100, और थ्री क्या होता है आपका 0011। The radiant efficiency of the luminous source depends on what? So the answer is temperature of the source. Light waves travels with the velocity of 3 into 10 to the power 10. In electrical resistance, welding material of electrodes should have. So answer is all of the above. Higher electrical conductivity we need. Higher thermal conductivity is sufficient strength to sustain high pressure at elevated. Which of the following is not a constituent for the making porcelain insulators? तो क्वार्ट्ज का यूज करते हैं एंड कैवलिन, फेल्सपर, नॉट अ सिलिका। सो आप ये क्वेश्चंस जो देख रहे होंगे, इसको आप पीडीएफ से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी बताने की ज़रूरत है आपको, ना ही इसमें कुछ ऐसा कुछ खास एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत एक्सप्लेनेशन लायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बायोट सेवर्ट लॉ इन मैग्नेटिक फील्ड इज एनालॉग्स टू विच लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बायोट सेवर्ट लॉ जो आपका मैग्नेटिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या होता है, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, व्हिच इज द कूलम्ब्स लॉ। कभी कभी आपको जो पेपर होता है उसमें कूलम्ब्स लॉ नहीं दिया हो, तो आप गॉस लॉ को लगा के आना। ठीक है, what is the divergence of the vector xi plus yj plus zk? So the three things are there, x, y and z coordinates. The answer will be the divergence for this is del x, del y, del z. That answer is 3. The coefficient of coupling between two air core coil depends on what? So it's depend on m equals to k root L1 L2. You know already mutual inductance or the self inductance of the two coils. Which of the following materials has the highest value of dielectric constant? That is glass. तो मन में आएगा, लेकिन the answer is this ceramics. Okay, तो for which of the following material has the highest value of dielectric constant? Then answer is here ceramics. Which, what is the set of all values of z for which the x of z attains a finite value? तो ये क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है कि जो एक्स ऑफ जेड है आपका, सो इट्स अ इनफाइनाइट पावर सीरीज। ठीक है, इट इज डिफाइंड ओनली एट फ्यू वैल्यूज ऑफ जेड। ओके, सो द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ जेड वेयर एक्स ऑफ जेड कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट वैल्यू इज कॉल्ड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप बोल सकते हैं, जिसे आप आरओसी भी बोलते हैं, दिस इज अ आरओसी। ओके, दिस इज कॉल्ड द आरओसी। During short circuit test of the single phase transformer, iron losses are negligible, क्योंकि आप जानते हैं कि iron losses negligible क्यों होते हैं, तो we have to apply the voltage on the primary side is low. Net field current in a DC compound motor is, the net field current is the IF net equals to IF plus IQ into NSC upon NF. Torque developed by three-phase 400 volt induction motor is 240 Newton meter. If the supplied voltage is reduced to 200 volt, the developed torque will be. So we know the formula of kV square. Okay, so the torque is proportional to the voltage square. So we have to apply the T1 upon T2 equals to V1 square upon V2 square. Then we will get the answer of T2 equals to 60 Newton meter. Overall efficiency is the multiplication of the thermal and generation efficiency. A charge q is divided into two parts, q1 and minus q1. What is the ratio of q upon q1 so that force between the two parts placed at given distance apart is maximum? For this question, you have to do what, okay, they are asking
the ratio of Q upon Q1. So charge Q, we know that it divided the Q1 and Q minus Q1. Okay, let the charges be placed at the distance R, then force, we know the formula. Again we put the formula of k q minus q1 upon r स्क्वायर. ठीक है, आपको पुट करना है वैल्यूज को और मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम को आपको अप्लाई करना है, जिससे आप डिफरेंशिएशन कर देंगे उस डी एफ ऑफ डी क्यू का. यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ q माइनस टू क्यू वन. क्यू माइनस टू क्यू वन, जब q इक्वल टू टू क्यू वन रखेंगे तो q अपॉन क्यू वन कितना आएगा आपका 2:1. आंसर आपका क्या है, वही आपका क्या है आंसर है 2:1. The electric potential at the surface of an atomic nucleus of radius 9 into 10 to the power minus 15 meter each. So for this question you have to solve like this, that total charges on the nucleus Q equals to ZE. So Q equals to ZE is 8 into 10 to the power minus 18 कूलम आएगा. फिर पोटेंशियल आपको निकालना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 into 10 to the power 6 वोल्ट आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. The distance between a projector and a screen is increased by 1%. Illumination on the screen. For this question, we have to apply the del E upon E, which is the minus 2 into delta R upon R into 100. So minus 2 into 1%, which is the minus 2%. Negative sign indicates that illumination will decrease. So illumination will decrease by the 1%. From the 1% to 1% decrease, which is 2% becomes, and answer is minus 2%. The capacity of the spherical conductor is 1 microfarad. Then its diameter would be. So for this question, you have to apply that capacitance of the spherical conductor is 1 microfarad. Okay. Now we know that V equals to Q upon 4 pi epsilon naught R, C equals to Q upon V. Then put the formula of V H in the equation number first. Then C becomes a 4 pi epsilon naught R. From here we find the radius, and it is equal to 1 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power 9. So diameter becomes 2R. Diameter is 2 into 9 into 10 to the power 3, which is the 18 into 10 to the power 3. Okay. So that's the answer, option number B, 18 into 10 to the power 3 or 1.8 into 10 to the power 4. So for this type of questions, you have to solve like this. Okay, given two bulbs are there. Okay, for bulb A conditions are there, for bulb B conditions are there. You have to find the resistance. ओके, इस सीन को देखते रहें, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तो आपसे पता लगेगा कि पहला जब आप सॉल्व करेंगे कि बल्ब ए के लिए पावर हम 400 वाट आ रही है, आप इधर देख सकते हैं. ठीक है, विच इज लार्ज देन द मैक्सिमम गिवन पावर ऑफ 100 वाट. तो उसकी वजह से क्या होगा, बल्ब ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड रेजिस्टेंस जब आप फाइंड करेंगे तो उसमें भी बल्ब बी के लिए 800 वाट पावर आएगी, तो वो भी क्या है आपकी ज़्यादा है, तो बल्ब बी भी आपका क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा. इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. Which of the following acts as depolarization like Lenz cell? तो MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड आपका क्या है, डीपोलराइजर का काम करता है इन द लैक लेंस सेल के. यूनिट ऑफ पेल्टियर कोफिशिएंट, तो ये अजीब टाइप के क्वेश्चन अब आने लगे हैं. तो जूल पर कूलम. ठीक है, अभी भी क्वेश्चन फिजिक्स के चल रहे हुए हैं, पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स पोलराइजेशन इज मेजर डिफेक्ट, देन आंसर इज वोल्टेनिक सेल. तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके दूसरे पेपर्स के लिए. ठीक है, विच एक्ट इज यूज टू रेगुलेट इंडियन पावर सेक्टर. ठीक है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 प्रेजेंट डे में आपका क्या है, वर्किंग मोड में. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट सच इनवर्स ट्रांसड्यूसर, ये आप अच्छे से जानते होंगे, इट्स अ पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल. सो इट एक्ट्स एज अ इनवर्स ट्रांसड्यूसर. The voltage at the two ends of the line are 132 kV and its reactance is 40 ohms. The capacity of the line is. तो आप लोग अच्छे से इसका फॉर्मूला जानते होंगे कि P इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन एक्स होता है. ठीक है, तो B कितना आपको गिवन है, 132 है, 132 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और x आपको 40 गिवन. सो आंसर विल बी 435.6 मेगावाट. Next question. For a three-phase system, calculate the instantaneous voltage of phase Y if the instantaneous voltage of the other two phases are 70 volt
एंड -50 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज में माइनस कर देंगे। 5 1 minus 5 2 is the answer. Determine the instantaneous value of the alternating current which is represented by IT if the value of t is 3. So we have to find the uh, instantaneous value। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको टी की वैल्यू केवल पुट करना है 3। ठीक है, टी की वैल्यू जैसे आप पुट कर देंगे 25 3 जो 75 होता है, और 10 साइन 75 -15 कितना होता है आपका 60 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 8.66। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट having resistance, inductance and the capacitance of the 30 ohm, 27 millihenry and 0.03 micro millifarad। तो मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको केवल वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, ओमेगा नोट आप जानते हैं 1/√LC होता है, वहाँ से आप ओमेगा नोट निकाल लेंगे, और क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा नोट L/R। तो ओमेगा नोट की वैल्यू निकाल के आपको पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो कैपेसिटर्स हैं जो कि कनेक्टेड है पैरेलल में 100 वोल्ट डीसी सप्लाई के अक्रॉस, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स विल बी। ये आप अच्छे से फॉर्मूले जानते हैं, E1 और E2 आप आसानी से निकाल लेंगे। मिलमेंस थ्योरम क्या कहता है? मिलमेंस थ्योरम कहता है इक्विवेलेंट वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में बात करता है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर C, आपको वैल्यू गिवन है, थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम अप्लाइड विद 50 वोल्ट, द वोल्टेज एट द टाइम ऑफ द इट्स टाइम कांस्टेंट विच। ठीक है, आपसे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है। For this question, you have to find the voltage at the time of the time constant. We know the formula Vc equals to V naught e की power minus t upon tau. So 50 e की power minus t upon tau at t equals to tau, Vc equals to 50 upon e. The answer will come 18.5 volt. The next question, what will be the secondary voltage of a potential transformer if the value of system voltage is 11,000 volt? The turns ratio of the potential transformer is 108 and the percentage voltage error of the transformer is 5%. For this type of question you have to apply this. Okay, so V1 upon V2, okay, is given 108, you can see. Okay, primary voltage equals to turns ratio into secondary voltage, V2 equals into 104 equals to 108 V2, percentage of error, okay, nominal minus primary voltage upon primary voltage, percentage error given is 5%, and we have to find the V2 from this formula. We know that we have only the primary voltage is 108 V2. So nominal voltage is 11,000 and primary voltage is 108 V2. From here we can find easily V2's value. So option number A is the right answer. What is the decimal equivalent of the hexadecimal number BF9? Here is the solution. Next question is, a boiler at home is switched on, the AC mains supplying power is 230 volt 50 Hz. The frequency of the instantaneous power consumed is. So we know that if we wrote the equation, then we got the P equals to Vm sin Im by 2 cos phi minus cos 2 omega t minus phi. From here we get the equation 2 omega. Okay, that second terms of the sinusoidal time varying, we will get the part 2 mega. So 2 mega means 2 into 50 hertz, we will get the answer 100 hertz easily. Which of the following diodes is also known as carrier diode? So carrier diodes are also called the Schottky diode, which is a fast diode. A factory runs in two shifts of 12 hours each, in which it consumes 30 kilowatt and 25 kilowatt in each shift respectively. Calculate the energy consumed by the factory per day. Now this is the trick to find the total energy. Even equals to, we know energy equals to power into time. Okay, the power is 30 kilowatt, or time is 12 hours. 25 into 12,
So we have to add all the things. We will get the answer 660. Next question is also same. There are three shifts. In previous question, there are two shifts are there. So total E equals to E1 plus E2 plus E3. Next question is a 4 kVA transformer. Okay, so we have to find the maximum efficiency for that. Then we know kVA cos phi upon kVA cos phi plus Pi plus PCU. So Pi equals to PCU is there. So 4 upon something upon 404 into 100, we will get the answer 90.9%. Next, a transformer has the efficiency of 80% and works at 100 volt and 4 kilowatt. If the secondary voltage is 240 volt, find the primary current. So, for this question, the formula becomes IP equals to V upon V only. P equals to VI, we know that. So, from that, we have to find I equals to P upon V. For next question, a transformer having turns ratio are given, resistance is given, connected across the secondary terminals. What is the equivalent resistance? Okay, current flowing in the primary. So left side we have to take, first we have to find turns ratio. So 1 is to 5 and N2 upon N1 is the turns ratio, which is the 5. The left side value is the R2 upon K square. R2 is our 500 and K square is 25. So answer is 20 ohm. Next, which of the following combination of three-phase transformer can be successfully operated in parallel? So delta star and delta star are the successful combination for operating in the parallel condition. A 200 volt machine supplies 20 ampere at 200 volt as a generator. The armature resistance 0.5 ohm. If the machine is now operated as a motor at the same terminal voltage and current, but with the flux increased by 20%, the approximate ratio of the motor. So first we have to find for the generator E equals to V plus IARA. Okay, so we know that 200 plus IA is given as with the IA is 20 ampere, so 20 into zero point 0.5. Okay, so it becomes a 210 volt. Now for the motor we have to find EV equals to V minus IARA. Okay, so V is 200 minus 20 into 0.5, so it becomes the 190 volt. Now we know the sequence N2 upon N1 equals to E equals to B by NZ upon 60A. From that formula, we have to find EV upon EG into phi 1 upon phi 2. Okay, so phi 2 is the 20% more, so it becomes the 1.2 times of phi 1. Now you have to put all the values in it and you will get the answer number C. DC generator uses for voltage drop compensation, which is known as, so it is a series combination, and DC machine torque is proportional to, so torque is proportional to K phi Ia, flux and the armature current both. Identify the control signals are generated by the timing and control unit of 8051 microcontroller in order to access the off-chip devices apart from the internal timings. Answer is the all of the above. RISC, you can see these are reduced instruction set computer. How many bytes of bits addressable memory is present in the 8051 microcontroller? So it's 16 bytes. How many 16-bit counters present in microcontroller? So two 16-bit counters present in microcontroller. A sensor that can be used for detecting the presence of objects surrounding it without having any physical contact is known as the proximity sensor. Choose the following the correct statement. Okay, read these things from the paper. You will get the answer. Pressure regulator reduce and control fluid pressure in compressed air systems. Illumination, we know that illumination is defined as the luminous flux upon area. What will be the number of lamps, each having 300 lumens required to obtain an average illuminance of 50 lux on a 4 into 3 meter rectangular room? So for this question we have to evaluate like this. We have to suppose the x number of lamps are required. Total lumens is 300x. Okay, you can see.
300 lumens is given in the question. Also, area of the room is 12 square meter. You can see, okay, 4 meter into 3 meter, which becomes the 12 meter square. So luminance into area equals to total lumens. So illuminance into area, how much? 50 into 12 equals to 300x. So from there, x equals to 2. Which factors are considered for illumination calculation? So all of the above: depreciation factor, coefficient of utilization, and waste light factor. The temperature control system of a geyser is the example of the closed loop control system. In what form of energy is radiated from the sun? So it's not. So here we'll get the electromagnetic waves. Okay, you can read this. So shorter wavelength of zero point 0.2 to zero point 0.4 micrometers out of the all solar energy. You can read these values because they can ask you anything from these points. What does the section 30? Read these options also in the paper. You can download the paper and read the points. Answer is general safety requirements related to service lines. What is the following is the class of the insulation having the maximum temperature with a standing limit? So for this question, you know already the table. Okay. So class Y 90 degree. I will write here Y 90, Y A E F, sorry, Y A E V F H, and for C is greater than 180. So answer is option number B, यानी कि C, class C. What is the formula to calculate number of poles? So number of pole length upon span plus 1. A 250-volt lamp has a total flux of 3000 lumen and takes a current of 0.6 ampere. Find the lumens per watt. The lumens per watt equals to lumens upon input power. So input power is V into I. Lumens per watt is 3000 upon 150, which is equals to 20. LVDT is the linear displacement. Select the most suitable pressure indicating device, which is the Borden gauge. Then read the question. Okay, that's the answer. I am giving you the time for the reading the question. So all the questions are simple now. Okay, read the question. Calculate resonant frequency. 1 angstrom is equals to, okay, 5400 kilojoule is becomes at 1.5 kilowatt hour. A 10 standard wire gauge electrode usually operates in the current range of 95 to 135 amperes. Which of the following electrodes will have the least diameter? So 20 standard wire gauge has the least diameter. How long does it take for the conventional variable frequency drive, okay, or voltage and frequency dependent, to turn off the inverter in order to start creating power? So answer is 10 to 12 milliseconds. So minimum seconds they can take to turn on the, okay, inverter. What is the speed of the auxiliary rotor on no load? So n equals to n s2. What would be the synchronous speed when a stator is wound with a three-phase winding and connected to ns equals to, you have to find 120 f upon p already. Next question is what F1 if a voltage of about 0.7 volt is applied across the base and the emitter of the NPN transistor. So a small current will flow between the two terminals. Okay, if this condition will happen, okay, अगर voltage 0.7 वोल्ट है और बेस में एमिटर के बीच में अप्लाई कर रहे हैं एक NPN ट्रांजिस्टर के अंदर, तो एक छोटा सा करंट क्या होगा आपका फ्लो होगा टू टर्मिनल्स के बीच में. Next question: what are the two standards that guide the method of calculating efficiency? So NEMA and IEC. तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को देख के मैं बता सकता हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल से रिपीट हुए हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है. और जो आपके ऐसे क्वेश्चन है, जैसे वाला जो क्वेश्चन था, ये आपको डिप्लोमा बुक में मिल जाएंगे देखने को, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर में मैंने कहीं देखे नहीं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन डिप्लोमा वाली बेस्ड क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं. What are the thermal conductivity of the aluminum metal? So 235 W per ampere.
What do you mean by instantaneous value? You know very well it is a value of alternating quantity in a cycle at a particular instant of the time. Which instrument is used to measure the equilibrium frequency? So electromagnetic wattmeter and also the frequency meter. So you can read this that wattmeter आपको पता ही पावर मेजर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाटमीटर क्या करता है आपका यूटिलिटी फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर अदर टाइप्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी also. Mathematical form of the Faraday's first law of electrolysis. And a question to check you. What would be the coil span if the span of the coil is reduced by an alpha electrical degree? So 180 degree minus alpha. Okay. What is the use of anode in a water heater? So it protects the tank from corrosion. बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं. Three questions remain. Nature of the following function. Okay, so a accumulator and the device that does not have a gate terminal हम जानते हैं डायरेक्ट जो डिवाइस है उसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है. The bandwidth of RF tuned amplifier is dependent on, so it depends on the Q factor of the tuned output circuit. So you can download the paper from the Telegram group also and from exam book website or exam review website.